Hey everyone, welcome to the channel. मेरा नाम है ओमी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ एडिथ फिंच। पिछले पार्ट में हमने मॉली की स्टोरी को एक्सप्लोर करा। भाई साहब, मॉली तो शेप शिफ्टर निकली। लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स में वो बदल रही थी। आई गेस इट वाज अ वे टू टेल अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। वेल, हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का पार्ट। बाकी स्टोरीज एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो वापस आ चुके हैं हम। भाई साहब, मैं ऐसा लग रहा है कि तीसरी बार ये गेम खेल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से मेरे को ये मतलब बार बार ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी थी। आह, This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. अच्छा, मॉली ने जब बिल्ली पाली थी तो उसका नाम मॉली रख दिया था। मैं तो खाली पीली समझ रहा, मॉली ही बिल्ली है। I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. हम्म, बहुत सारी चिड़ियाओं के पिंजरे दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर। We got along, and it was a good place to hide from my mom. दादी के साथ अच्छी बनती थी कि Her room नानी। was like a museum. हेलो ओडिन। For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune भाई ये क्या कूल and चीज़ है। misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. तो हमारी फैमिली पे कोई कर्स लगा आई थिंक। On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. पानी में तैरने वाला हाउस। ऑल राइट। But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. सैड भाई। Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. ऑल राइट, तो ये लोग बच गए, बट ओडिन भाई का क्या हुआ। Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. ऑल राइट। His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. ऑल राइट, ये कुछ हमें स्टोरी बैक स्टोरी हमें पता चली है। सॉरी, बैक ही कर दिया मैंने। ऑल राइट। Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. ये तो बात सही गई। कुछ तो इनका ऐसा चक्कर है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये स्वेन और ईडी का रूम है आई गेस। देखे तो क्या क्या है यहाँ पर। When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. ओहो, ड्रैगन। ड्रैगन किल्स फिंच। क्रेजी हो रहा है। Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. भाई साहब, ये क्या है। The only पिंक। trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. पूरा ही पिंक बना रखा है। It was a pretty big trace. क्या। एक और किताब, लेट्स गो। There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. ओके, एक और सीक्रेट एंट्री। भाई साहब, मजेदार है ये तो बहुत। Sven gave देखते हैं। Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. अच्छा, ये वो रूम है जहाँ पर फोटोज सुखाते हैं ना खींच के। ओल्ड कैमरास में ऐसा सिस्टम रहता था।
शायद अभी भी ऐसे कैमरास चलते हैं। मिल्टन, कुछ फोटोग्राफ्स रखी हैं और ऑल राइट, थोड़ा आगे की स्टोरी हमें अब खुली है हमारी I knew न्यू Grandpa जगह। Sam had a twin, कैल्विन, and that he never talked about him. थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इतना कूल रूम है भाई ये, लाइक किसने बनाया ये? I guess कमांड my grandpa सेंटर। didn't like history any more than my mom did. अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, इसकी यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होगी। खेला हुआ है फिर भी भूल जाता हूँ। यहाँ चेक करते हैं पहले क्या है ये। ऑल राइट, क्या क्या खोल दिया है हमने। अच्छा अभी यहाँ नहीं जाना है, अभी यहाँ नहीं जाना है। How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. कैल्विन भाई उड़ ही जाओगे तुम। But that day, he finally made up his mind to do it. ओ माय गॉड गाइस, I told बहुत him going around was impossible. कैल्विन भाई Maybe if I में, hadn't said that, मुझे तो बोलने दे। कैल्विन भाई में बहुत जिगरा है, देख सकते हैं आप। maybe if the wind hadn't picked up, ओह then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. लेट्स गो। That's what I want to remember about my brother. ओके, घूमता ही जा रहा है। अरे Trying to fly. कूद गया भाई, कूद गया, And he did. उड़ गया। कैल्विन भाई तुम तो Calvin's बहुत ही story felt घातक हुए है strangely तो। familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. मैं तो ना करता है ये सब। कैल्विन भाई की After the हत्या। funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. कैल्विन Mom भाई said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. बच्चों ध्यान से खेला करो यार तुम लोग। The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. इधर जाएं, इधर जाएं। इस तो ये वाला रास्ता हमारा खुल चुका है। चल वापस चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओह मिल्टन फिर से।
Barbara Growing up, Finch. I always thought of Barbara as a child star. ओ, तो मूवी स्टार है भाई, अपने खानदान में कोई मूवी स्टार भी है? भाई साहब ये कौन है? अरे I never thought about how hard it must have been for her afterwards. तेरी बारबरा। पूरी फैमिली में हर जगह कुछ ना कुछ चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर नोटिस करने के लिए। टू मच टू बी ऑनेस्ट। अवार्ड्स तो जीते हैं यार बारबरा ने। ये मैं थंबनेल बना दूंगा। चलो अब देखते हैं इसकी स्टोरी में क्या है। Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. ये बेस्ट है भाई। Be ready guys? Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Right? As a child star, Barbara was famous for her scream. Scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. कैसी लग रही है? Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... My God, That मेरे was a कान। great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara हाथ काट लिया got भैया stuck ने। babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. भाई ये You're मेरे को right. हॉरर मूवी की याद Also, दिला रहा I है। loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding अच्छा। and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. रिक भाई So गया। Barbara went to look for him, right on cue. रिक के तो हो गए भाई। बल्ले बल्ले। She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ये अच्छा, हमें मूव करने के लिए दीजिए। रिक भाई, आओ। She found Rick's crutch and imagined the worst. ओहो। अरे अरे। एक क्रेजी वेपन आ चुका है। अब तो बताता हूँ मैं रिक को, सॉरी रिक के भूत को, सब जो भी है। आओ मैं भाई तबाही मचा दी है। The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. ये है भाई विलन। Then ate his family 10 years ago tonight. यहाँ अब्बा का हाथ कट गया था। क्या क्या क्रीपी चीजें हैं भाई। बॉक्सिंग कर ली जाए थोड़ी। फ्रिज में हमेशा Rich rattled and grew still. हमेशा फ्रिज में ही बंद करते लाश को।
क्या जंप स्केयर था? हाँ देख Barb, भाई, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. all right. Hours later, Barbara! Walter, क्या हुआ है भाई? what's going on up there? Ah! Okay. I'm किसी ने coming वॉल्टर up. भाई की गुद्दी पकड़ This ली is a गाइस। trick. You're dead, Walter. जल्दी आ रहा हूँ वॉल्टर में बचाने, अपना वेपन लेकर। अरे अरे कौन है? सामने आ। ऐसे वॉल्टर Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. पीछे तो देखो पीछे। Barbara turned, saw the hookman, तो मैं बताता हूँ। was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough. अरे भागो भाई। अरे मैं तो There's got to be another way out of here. That night, she played her part beautifully. तो मैं बताता हूँ भैंस की। तो करना क्या है अब? Molly's door. Years. Inches grow. हाँ ये ले। He wasn't moving, वाह यार। but she sensed the story might not be over yet. तो बताना पड़ेगा। ओह नो, गायब हो चुका है वो। Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was. कोई आया है गाइस? मैं आ रहा हूँ गेट खोलने। Dying to speak to young Barbara. ये गेट खोलो। She heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. ओके Had come to surprise her. सरप्राइज पार्टी। It was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. ओ भाई साहब। And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. अरे I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard,
But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. ओ भाई साहब, Now क्या that's what हुआ I बारबरा के call साथ? a real eerie tale. भाई साहब, ये तो बहुत ही कुछ क्रेजी हो गया है बारबरा के साथ। Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. ओके गाइस, तो बारबरा की स्टोरी भी खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा ही कुछ तो क्रेजी हो गया एकदम ही कॉमिक स्टाइल में। बहुत मजा बहुत आया लेकिन खेलने में, लेकिन सही था। वेल इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और कमेंट करें अपने इस वीडियो का फेवरेट पार्ट। तब तक के लिए टाटा भाई, टाटा। जाओ जाओ, एडिटर कट कर दो, कट कट कट।